Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Pyramid Technoplast Limited Q1 FY2024 earnings conference call hosted by Go India Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on a touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Divyanshi Dave from Go India Advisors. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you, Zico. Good morning, everyone, and welcome to Pyramid Technoplast Limited earnings call to discuss Q1 FY2024 results. We have with us on the call today Mr. Bijay Kumar Agarwal, Managing Director and Chairman, and Mr. Jaiprakash Agarwal, Full-time Director and Chief Financial Officer. I must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risks that the company may face. I now request Mr. Jaiprakash Agarwal to take us through the company's business and financial highlights, subsequent to which we'll open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir. Mr. Jaiprakash Agarwal, you may go ahead, sir. लाइन आवाज नहीं आ रही है फोन तो चालू है उन्होंने फोन कॉल लिया तो गायब हो गए आवाज साउंड नहीं आ रहा है ओके Ladies and gentlemen, please stay connected while we connect the management. Thank you. Ladies and gentlemen, we have the management line reconnected, so you can go ahead. Hi, good morning, ladies and gentlemen. So thank you for joining us for our maiden earnings Concall today. So this has been a landmark year in the history of us. So with a very successful IPO listed on the stock exchange, so it is a great moment of pride for us, and this couldn't have been possible without the support of our stakeholders. So I would like to take this opportunity to extend our appreciation for the immense support you have given us, and we look forward for them going ahead. So before I discuss the results in detail, I would like to give a brief history of Pyramid. So Pyramid is a 25-year-old company, and we are a leading manufacturer of industrial packaging products, giving a total industrial packaging solution to our customers, manufacturing from polymer drums to metal drums to specialty product IBCs, from the range of 20 liters to 1,000 liters, serving industrial customers from agrochemicals, specialty chemicals, paint industry, pharmaceutical industries, etc. So now we have an operation spread across 7 manufacturing facilities, which are fully automated and state-of-the-art facility. So currently we have 18,837 metric tons per annum capacity for polymer drums, 3,240 metric tons capacity for IBCs, and 3,600 metric tons capacity for MS drums. All our plants are operating at 75 to 80% capacity. We run over extremely
efficiently and have an industry-leading asset turnover of around 5x. So we are a preferred supplier to our customers in each of our products, and in IBC we have around 40% market share in India. We have a strong net cash flow balance sheet, and proceeds from IPO have been utilized to pay off long-term debt of 40 crore. So now we are a debt-free company. Our incremental capex, which is planned, will be over the next 2 years, will be funded from our internal accruals without taking additional. So now I would like to touch upon our quarterly performance. Net sales for our quarter stood at 138.5 crore, up by 13% quarter-on-quarter and 9% year-on-year. EBITDA for the quarter stood at 12.6 crore with an EBITDA margin of 9.1% against 11.1% in quarter 4 financial year 2023. Margins were little impacted in Q1 24 due to drop in polymer prices, which are expected to even out over the next cycle. As a matter of fact, the polymer prices have recovered since, and we are sitting on an inventory gain of rupees 4 crore. So we follow a cost-plus model where any significant change in raw material prices are passed on to the customer. Hence, our margins are sustainable at 11%. Profit after tax for Q1 FY24 stood at 7.8 crore. So coming to the segmental performance, so polymer drum segment contributed rupees 61.4 crore, constituting 44% of overall revenue. The share of IBC business, which is our value-added product, stood at 29% of the overall revenue at 39.9 crore, followed by MS drum, which constituted 8% of overall revenue and stood at 11.4 crore. Balance has been on account of trading of polymers. So going forward, we are focusing on increasing the share of our high margin products like IBC, increasing automation in metal drum. We are fully commissioned line 1 for IBC plant in July 2023 at our newly started Unit 7 in Bharuch. We are focused on creating long-term shareholder value, will maintain our return on equities of around 25% plus. Once again, I would like to thank each one of you for your immense support, and I look forward to our continued interaction. With this, I would like to open the floor for questions. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question is from the line of Dhananjay Kumar Mishra from Sunidhi Securities. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. And good morning. Just wanted to know this from this Unit 7 Line 1, in terms of unit, how much capacity is added in IBC, and all put together, how much capacity will be added, or what is the existing capacity in terms of units? Like we have given 3240 metric ton in terms of capacity till as of now. So in terms of units, what is the existing capacity, and all 3 units put together, what will be the existing capacity in IBC in terms of units? 1,20,000 IBC per month per year की capacity add हुई है Unit 7 में, 10,000 IBC per month. And we are already having capacity of 20,000 units. 20,000 unit हमारी already capacity चल रही थी. अभी हम 30,000 IBC की capacity हो गई total per month की. For IBC. For IBC. So 50% increase हुआ है sir, right? हाँ, 50% increase हुआ. Correct. So if we take 150 crore अपना जो revenue आया है FY23 में, तो we can expect कि ये साल तो ठीक है, थोड़ा late आया है capacity full impact, but next year we can easily do 225 to 250 crore kind of. Around 100 crore is the capacity for the Unit 7. So this year we are expecting to achieve around 30-40 additional from this Unit 7.
टोटल रेवेन्यू का 35 से 40% आईबीसी से आएगा साहब इस साल 23 जो क्लोज होगी 24 मार्च में हमारे। अच्छा। ऑर्डरिंग कैसा रहता है सर? मतलब ऑर्डरिंग लॉन्ग टर्म रहता है कि एज ए शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स आते हैं? जो भी कस्टमर है अपने पास सब लॉन्ग टर्म है, उनको साइन एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन वो ईयरली पूरे काम लेते हैं और पूरा रेवेन्यू सिस्टम है, फॉर्मूला बना हुआ है हमारे से। हर महीने उनको रेट जाती है और आता है, सारे कस्टमर रेगुलर जाते हैं। अच्छा, तो ये रिप्लेसमेंट डिमांड भी आता है? मतलब पुराने जो है वो है, नई डिमांड भी आती है। 75-80% जो कस्टमर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर सकते हैं, 20% स्पोर्ट में आते हैं। तो नए कस्टमर मुंह से एक दूसरे को बताते हैं तो नए ऐड होते हैं। तो हर महीने हर कुछ डेली कोई ना कोई कस्टमर ऐड होता है। तो मेजर ग्रोथ अपना 30-40 करोड़ एक साल में आएगा आईबीसी से, और बाकी थोड़ा सा अपना ये पॉलीमर वाला सेगमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसमें कुछ ग्रोथ आएगा? तीनों में आएगा। मेटल ड्रम में मेटल ड्रम की भी कैपेसिटी मैंने बढ़ाई है। प्लास्टिक ड्रम के भी 3 लाइन 200 लीटर की बढ़ाई है, छोटी मशीन की भी बढ़ाई है। तो वो ग्रोथ तीनों सेक्टर में ही आएगा मेरे पास। We are focusing on growth expansion in all the products, and now added a capacity expansion in majorly into Unit 7, but additional units we have added in our existing units only for plastic drums and metal drums. ओके। और लास्टली अपना जो यूनिट 8 और यूनिट 9 का जो प्रोग्राम है, तो ये कितना इसमें कैपेक्स करना पड़ेगा, और ये कभी तक स्ट्रीमलाइन कब तक अपना जो इंटरनल नेचुरल है उससे कैपेक्स हो जाएगा, और मेरे को लगता है 24-25 में वो चालू हो जाएंगे दोनों प्लान। तो इसमें कितनी कैपेसिटी ऐड होने होगी यूनिट 8 और यूनिट 9 में? ये सब मिला के करीब मेरे को लगता है 350-400 करोड़ का 300 रेवेन्यू उसमें आने लग जाएगी सब फुल चलने के बाद। Once it is 100% utilized. अच्छा, तो बट दिस इज अक्रॉस ऑल द सेगमेंट और दिस इज ओनली इनटू आईबीसी? तीनों सेक्टर में रहेगा ग्रोथ। हम जो भी करेंगे तीनों सेक्टर में करेंगे। We will keep on focusing on all the products. उसका कारण है कि हमारे कस्टमर को तीनों रिक्वायरमेंट रहती है, मेटल ड्रम, आईबीसी और पॉलीमर ड्रम। हम तीनों का ही कैपेसिटी ऐड करेंगे हर जगह जो भी करेंगे। अच्छा, पॉलीमर ड्रम और आईबीसी और मेटल ड्रम। अच्छा, मेटल ड्रम का भी अच्छा डिमांड है क्या? हाँ, बहुत अच्छी डिमांड है। जितने प्लास्टिक ड्रम लगते हैं उतनी मेटल ड्रम का मार्केट उससे कुछ बड़ा ही है। मार्केट साइज मेटल ड्रम की उससे बड़ी है। तो आप बोल रहे हैं 300 करोड़ इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आएगा यूनिट 8-9 से, तो उसके लिए कितना कैपेक्स होगा? 45 से 50 करोड़ के आसपास का होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मैं फॉलोअप में पूछूंगा कुछ रहेगा। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Keshav Harlalka from BHH Securities Private Limited. Please go ahead, sir. Hi. Vijay Kumar Agarwal, thank you. I'm Keshav Harlalka from BHH Securities Private Limited. Thank you so much for getting me on the call and giving me an opportunity to ask questions. Also, I have a question for you. Ki last year we did a turnover of 480 crores. उसमें polymer drums was 282 crores, MS drums was 44 crores, and intermediate bulk containers IBC was 154 crores. So ये आपका अभी right now we are operating at 60% capacity. So are we going to operate at 60-70 कि अपना capacity utilization will go up? And can you give us some what would be the capacity in FY25, FY24, FY26 for IBC, because we are having a major expansion in IBC. So क्या capacity add होने वाली है? Are the margins also going to go up? Because right now across all the 3 product categories, our EBITDA margin is 10.8% and PAT margin is 6.6%. So अपना margins will our margins also move up, PAT margin, because अगर शायद capacity बढ़ती है तो my understanding is you'll have a better bargaining power with the people whom you are buying the the steel or whatever you are getting raw material का bargaining capacity आपका बढ़ जाएगा. So will you be able to give better margins? Will the margins move up along with the capacity going up? That is question number 1. The second thing is, मेरा just a broad understanding, your revenue has grown 24% in pandemic years. The EBITDA has grown 26% in pandemic years. Your PAT has grown 37%. So PAT 37% कैसे बढ़ा when EBITDA has grown only 26%? And ये 37% PAT आपका grow हुआ है. And if you are annualizing this 37% PAT from FY23 to 24, so 31.8 crores का जो आपका PAT आया है, that will go to 44 crores. And आपका 3 crores का interest saving होएगा, because you are totally net debt free right now.
So are you going to do 47? Can we assume a 47 crore PAT for FY24? And can you give us some guidance of what we are going to get in FY25 and FY26 based on the capacity expansion and also the margins moving up? देखिए मैं एक्यूरेट नंबर तो नहीं बता सकता हूँ आपको. हमारा जब सेल बढ़ेगी, खर्चे जो है कम हो जाएंगे तो पेट ओवरऑल ज्यादा ही रहेगा. एक्यूरेट नंबर बोलना गलत है. वो हम कोशिश तो बिजनेस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बिठाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए. कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा. तो मेरे को होप है जो मेरा पेट था उससे बहुत बेहतर होगा 24 में. और कैपेसिटी जो समझ रहे हैं ना ये रेवेन्यू वाइज, तो सारे जो धीरे धीरे आईबीसी की जो रेवेन्यू है बढ़ती जाएगी. मेटल ड्रम की थोड़ी कम बढ़ेगी, प्लास्टिक ड्रम कम बढ़ेगी. ओवरऑल जो है तीनों सेक्टर में ग्रोथ होता रहेगा. तो आईबीसी का भी व्हाट इज द एबिटा मार्जिन, व्हाट इज द पैट मार्जिन और कितना आपका मार्जिन बढ़ जाएगा? बिकॉज आईबीसी में अगर शायद आपका कैपेसिटी इज गोइंग इन आईबीसी तो you'll have a better bargaining power with Jindal and JSW from wherever you are sourcing your raw materials. So I am expecting कि आपके margins will also go up. It will not be at 6.6%. It can go to 9% is what my expectation is. So will your margins also move up, sir? बस एकदम सही बोल रहे हैं आप. उसमें कोशिश यही कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम मार्जिन लेके आपको मार्केट में दिखाएंगे कि हमने ये प्रॉफिट किया, पहले से मैं कोई फिगर बोलूंगा तो गलत होगा. लेकिन ये पक्की बात है कि जो पेट हम अभी दिखा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा आएगा चाहिए. जरूर आएगा ज्यादा, ये जरूर लगता है. बिकॉज आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यू सेड कि 480 क्रॉस का आपका सेल्स हुआ है, आप 3 years में उसको डबल कर दोगे. So I think your target is 3 years, which is FY24, 25, 26. By May 2026, by March 2026, if you are doing 1,000 crores of turnover, so उसमें IBC कितना होगा percentage? How much would be MS drums? How much would be polymer drums? Give us a broad outline, sir. You may not give us exact numbers, but percentage wise कितना होगा? Say you are doing 1,000 crores of sales in March 26. 3 years आगे की बात कर रहा हूँ. So what would be polymer drums? What would be MS drums? What would be IBC? हाँ सर, 26 में मेरे को जो उम्मीद है 40% आईबीसी का रेवेन्यू रहेगी. 400 crores is what IBC would be. Okay. 40% आईबीसी से रेवेन्यू रहेगा. एचबीपी से 50% रहेगा. मेटल ड्रम से 10 से 11% रहेगा. Got it. And आपके मार्जिन जो अभी 6.6% है, कैन आई अज्यूम कि 9% हो जाएंगे सर? सर हम तो 15% करने की कोशिश करेंगे. जितना होगा वो दिखेगा. तो मैं कोशिश करूंगा. Fair assumption to make it will grow from 6.6 to 9%. कोशिश तो मैं सर ऐसे नहीं बोल सकता हूँ. मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं 15% कमाऊँ. It will आएगा सामने वो दिखेगा सर. कोशिश रहेगी. Year on year basis it will improve for sure. हाँ. In what we have committed, we are on track for that, and we are growing at 25%, and this is all planned, and this is will going to target for this year also and next year also, and our numbers will show you. Got it. Thank you so much, sir. I wish you all the best. But जो मेरा understanding है, what my understanding is, if you are going to do 1,000 crores by March 2026, तो आपका 80 to 100 crores का PAT हो जाएगा, which is right now 32 crores for last year. 80 to 100 crores easily will achieve by March 2026. जी सर, कोशिश पूरी रहेगी कि इसको आप जो सोच रहे हैं वो पूरा करूँगा. We want to give maximum return. ये साल का मुझे immediate visibility of 47 crores for this year. For this year, you just adding the numbers, I am seeing 47 crores this year will come, sir. जी सर, जी. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Akshat Chabra from Niveza. Please go ahead. Hi, firstly, congratulations on a successful IPO. Thank you for this opportunity. So my question is basically on the pricing front. So what are the price ranges you're selling products across the 3 other segments like IBC, MS drum and poly drum? Can you please be a little louder, sir? Mr. Akshat, may we request you to use your handset, please? Okay. So my question... Hello. Can you hear me? Hello? हाँ सर, आ रही है आवाज, बोलिए ना. हाँ जी. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके जो प्राइस रेंजेस है वो across 3 segments है. So what would the margin be if you could share a ballpark figure across the segments, and how sensitive are you to the crude oil prices? अगर कुछ conflict हो गया तो अगर political conflict होगा तो crude oil prices ऊपर जाएगा तो आपके margins पर कितना इफेक्ट होता है? देखिए, हमारा पॉलीमर का जो भी कस्टमर जो भी हमसे ले रहे हैं उनका मंथली बेसिस पे प्राइसिंग होता है. एक फार्मूला बना हुआ है. तो यदि प्राइस कम होती है तो हम प्राइस पास ऑन करते हैं, तो सामने पास ऑन कर देते हैं. हेलो. हाँ जी. है ना, वो तो प्राइस का कोई लोड आता नहीं है मेरे को अभी तक.
इस साल में वो सामने पास हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। और आपका मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल नए 2 प्लांट में क्या है, और आप 75% यूटिलाइजेशन रेट पे चल रहे, तो इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हियर, एंड इफ यस देन विल द एक्जिस्टिंग मार्जिन्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ दैट? मार्जिन देखिए, हमारा डेप्थ पेमेंट हो गया है तो वो इंटरेस्ट की होगी, प्लस जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है, ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन और सेल बढ़ता है तो हमारा मार्केटिंग का कॉस्ट, सेल का कॉस्ट, वो सब कम रहता है, तो वो मार्जिन ज्यादा ही बढ़ने वाली जैसे जैसे सेल बढ़ेगी। हाँ, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी है वो 75% के बाद जब यूटिलाइजेशन रीच होता है तो आप लोग नया फैक्ट्री खोल देते हो, तो कैन दिस नंबर बी इम्प्रूव टू अबाउट 85-90% बिफोर यू ओपन अ न्यू फैक्ट्री? ऐसा हो नहीं सकता है। जो कैपेसिटी 80% से ज्यादा पॉलीमर ड्रम में हम आउटपुट ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कलर चेंज, वेट कर रहा है, कभी पावर है, कोई मशीन मेंटेनेंस है, तो 80% फुल यूटिलाइजेशन ही है। वो कोशिश करते हैं 1-2% किसी साल में बढ़ जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 80% आउटपुट ले रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है। और लास्टली आपका जो, कैन यू शेयर सम लाइट ऑन द मार्केट शेयर अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट मार्केट शेयर यू आर टारगेटिंग अक्रॉस दीस प्रोडक्ट्स? जैसे कि अभी मैंने उतना देखा नहीं, आईबीसी का मैं समझता हूँ कि 40% मार्केट शेयर है मेरे पास। मेटल ड्रम और प्लास्टिक ड्रम का उतना जज नहीं कर पाया हूँ कि कितना मार्केट शेयर है मेरे पास। बट प्लास्टिक ड्रम लगभग हम महीने का 200 लीटर वाली जो ड्रम है 1,80,000 के आसपास ड्रम बना रहे हैं, महीने में बेल बना रहे हैं और बेच रहे हैं। छोटे ड्रम भी हम उतने ही लगभग बना रहे हैं, 100 लीटर से नीचे वाले, तो वो भी बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पूरा मार्केट शेयर हम कुछ अभी तक रिसर्च पूरा सही ढंग से नहीं कर पाए कि आपको बता सकूं कि क्या मार्केट शेयर है मेरा। Going forward, we will keep on increasing the capacity and we will try to improve our market share from 40% and above. अंडरस्टूड। और आपके जो 2 नए प्लांट खुल रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और पैट और एबिटा पे कोई इम्पैक्ट आता है कि क्या इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा उसका? 1 by 1 फैक्ट्री खोलते रहे और मेरा पेट बढ़ता रहा है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ता जाएगा। Bargaining powers will increase with opening. Once it is 100% utilized, our margins will improve further. Okay, ठीक है। Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Ganesh from SGK Advisors. Please go ahead. Sir, can you hear me? Yes, sir. Good morning. Good morning. So, sir, since we are we don't have any net debt, will there be no interest component starting from this year? इस ईयर तो जब शुरू के 4-5 महीने का इंटरेस्ट तो आएगा ना। अभी जब मैंने पेमेंट किया आईपीओ कंप्लीट होने के बाद, तो शुरू के 5 महीने का जो भी है वो इंटरेस्ट आएगा। बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत जो यूज करते हैं तो आएगा, बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए 4 करोड़ का फाइनेंस था इंटरेस्ट, तो वो 1 करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास आएगा इस साल में। अगले साल में उससे और कम हो जाएगा। Okay. So, I understand this question was answered, but I am just repeating the question since I didn't understand fully. In Unit 7, we have recently added capacity for 120,000 units of IBC. How many more units will we be adding in Unit 7 IBC in FY24? अभी तो 1 लाइन ऐड किया, 2 लाइन और ऐड हो सकती है वहाँ पर। अभी जो कैपेसिटी ऐड किया वो 1 लाइन किया, वहाँ 2 लाइन तक ऐड और हो जाएगी। जैसे मेरी कैपिटलाइज 50-60% यूज होने लगेगी, दूसरी यूनिट में लगाने की तैयारी कर लूंगा वहाँ पर। Okay, so the 2 additional lines will be what, 120,000 units each? Yeah. So there is a capacity of additional 2 lines can be installed in that existing infrastructure. So as and when our 50-60% capacity go, we will plan for the next line as soon as possible. So this year we are targeting to fully utilize the Unit 7 unit for 1 line which is being installed now. Okay, great. So considering IBC as a value-added product, which some of your competitors also do, can you kind of share a broad EBITDA range for IBC versus the other products? देखिए, हमारा जो मेटल ड्रम और प्लास्टिक ड्रम में पेट आता है वो 6% के आसपास है, 5 से 6%, और आईबीसी में पेट हमारा 10% होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आई विल जॉइन द क्यू फॉर द क्वेश्चन। Thank you. Our next question is from the line of Gaurav Somani from Common Capital. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. Sir, my question was if you can talk a little bit about the industry structure, who are your competitors? Because
we are already operating, our ROE is in the range of 34-35%, and with the additional capacity and the margin improvement, our return ratios are looking very attractive to attract competition. And आप बोल रहे हैं कि हमारा 40% मार्केट शेयर भी है, तो थोड़ा इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बताएंगे. We are into manufacturing of bulk packaging segment, which includes metal drums, plastic drums, and combination of IBC, that is combination of plastic and metal. So we are manufacturing from 20 liters to 1000 liter packaging and giving solution of entire packaging solution to the industry. So there is no manufacturer as such who are manufacturing all the three range apart from one of the listed companies. So we both are enjoying around 40% market share in IBC, and our competitor has a higher market share. So going forward, we will continue to grow and maintain our market share, and we'll try to improve our market share in IBCs and other products. Okay. And sir, the segment-wise margin, right? You are talking about the PAT or the EBITDA? IBC EBITDA you have said for 10%, right? No, IBC PAT is around 10%. PAT is 10%. Yes, sir. Okay. So, and secondly, how do we operate? Like, do we have a order book kind of stuff where we keep getting order books for at a monthly level or a quarterly level? How does it work? And what would be the ईयरली रहता है साहब. ये जो भी कस्टमर है वो ईयरली पूरे सालों साल ले रहे हैं. सालों साल हम एक एवरेज है. कोई किसी महीने में 5 IBC कम ले लिया, कोई 5 ज्यादा ले लिया, या कोई 100 IBC ज्यादा ले लिया, कोई कम कर लिया. ड्रम में भी कोई 1000 ड्रम कभी कम ले लिया, कोई 1000 ज्यादा ले लिया. जो भी बनता है ड्रम या IBC और जो भी बनती है शाम तक में पूरा प्रोडक्शन होता है, जाता है. कंटिन्यूड प्रोसेस है. सबको जो भी उनके वेसल में माल रहता है उसके बाद माल मंगाते हैं, पैक करते हैं. तो ये कंटिन्यूड कस्टमर है सारे. डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन था कि आपको ऑर्डर विजिबिलिटी 1 महीने की रहती है, 2 महीने की रहती है? ऑर्डर वैलिडिटी हर महीने आती है. ऑर्डर हर महीना रेट चेंज होती है, इसलिए हर महीने ऑर्डर कॉपी आती है 1 तारीख को, और उसके हिसाब से पूरे महीने माल जाता रहता है. इट्स अ रिकरिंग बिजनेस. मंथ ऑन मंथ बेसिस दे रिक्वायर पैकिंग मटेरियल. वी आर देयर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग देम since many years, and we will keep on doing so and keep on adding customers on a monthly basis. This is our strategy. Sir, and what would be your revenue contribution from, say, top 5 or top 10 clients? ये 30 कस्टमर है. टॉप 15 कस्टमर में हमारी सेल 30% है. और एक कस्टमर से 5% 6% से ज्यादा का कोई 1-2 कस्टमर है. उसके बाद सब नीचे ही है, उससे ज्यादा नहीं है. Got it. सर, और ये पॉलीमर जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो हम लोग 1 महीने के लैग में पास ऑन कर देते हैं. हाँ. ओके. ठीक है सर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you. Before we take the next question, a reminder to all participants that you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Dalpat B. Mehta from Sun City Advisors. Please go ahead. Yeah. Thank you, sir, and congratulations for having a successful IPO and being a listed company. My first question is for this margin, which we have little bit discussed. Sir, can you tell me the margin, EBITDA and PAT margin for individually 3 items separately? वो निकाल के मैं देता हूँ सर आपको. मैंने इनके पास भेज दूंगा. निकाल के पेट तो मैं निकाला है, बाकी वो मैं भेजवा दूंगा. रफली चलेगा, इतना एग्जैक्ट नहीं चाहिए. जैसे पॉलीमर में EBITDA मार्जिन क्या है, IBC में क्या है, MS ड्रम में क्या है? देखिए, मैंने एक्यूरेट नहीं निकाल के रखा EP डाटा. एवरेज EP डाटा हमारा जो आ रहा है वो 11% के आसपास आ रहा है तीनों का. PVD है जो 10.8 एवरेज ठीक है, बट अगर सेपरेटली अगर अवेलेबल है तो बता दीजिए. एवरेज नहीं अवेलेबल नहीं है सर, वो मैं आपको भिजवा दूंगा. एक्यूरेट आपको मिल जाएगा. ओके. और ये तीनों आइटम के लिए व्हाट इज द मेजर रॉ मटेरियल फॉर इंडिविजुअल 3 आइटम? मटेरियल में HDP पॉलीमर लेते हैं हम. HDP है प्लास्टिक और सम प्लास्टिक ड्रम के लिए है, और मेटल ड्रम के लिए हम JSW वगैरह से स्टील परचेज करते हैं, और GI पाइप बनाते हैं हम IBC में, वो भी हम JSW टाटा से लेते हैं. तो our major raw material is steel and polymer. वही है.
इन प्रोपोर्शन कुछ बोल सकते हैं, पॉलीमर कितना परसेंट है और स्टील कितना परसेंटेज है? मेरे को ज्यादा इतना रफली 70% पॉलीमर है और 30% स्टील है. ओके, 70-30% है. ओके सर. अभी पॉलीमर मैक्सिमम हम 90% इम्पोर्ट करते हैं. This all raw material is sourced locally from India or imported? पॉलीमर मैं पूरा इंपोर्ट करता हूँ. 90% तक इंपोर्ट ही होता है पॉलीमर. स्टील लोकल से लेता हूँ, JSW टाटा वगैरह से, पोस्को से, इनसे लेता हूँ. वो लोकल रहता है सर. ओके. और जैसा सर ये ऑर्डर के लिए बात हुआ था, अपना सारा प्रोडक्शन एज पर ऑर्डर बनता है या एज पर प्रोडक्शन होके फिर वो सेल होता है कि ये आइटम रूटीन में चल रहा है तो वो पहले से बना दिया और बाद में सेल डिलीवरी होता है? ये साहब ये एक चीज का जैसे फ्रीज बन रही है ना, एक टाइप की फ्रीज बन रही है, अब जा रही है, वैसे ही है. जो 8.2 का ड्रम है रेगुलर बनता रहता है, रेगुलर सारे कस्टमर को वही जाता है. किसी को 9 किलो का जाता है, किसी को 10.6 जाता है. वो रेगुलर प्रोडक्शन है, रेगुलर जाता है. किसी का ऑर्डर वो तो महीने के तो शुरू में आ ही जाता है. मालूम है कि इनको कल ये भेजना, परसों इनको ये भेजना, डेट वाइज सब शेड्यूल रहता है. उस शेड्यूलिंग के हिसाब से माल चला. So it's more on understanding, not the exact order कि ये महीने में ये पार्टी को उतना चाहिए या वो ऑर्डर नहीं किए. एग्जैक्ट ऑर्डर ही आ जाते हैं और उसी हिसाब से बनता है. लेकिन वो अपने सुविधा के अनुसार से खोल करके माल अपनी फैक्ट्री से लेते रहते हैं. बड़े बड़े कस्टमर का जो भी आया शेड्यूल आ जाता है पूरे कि हमको इसी डेट को इतना ड्रम चाहिए तो चला जाता है. आपका पेमेंट साइकिल क्या रहता है सर? इज देयर एनी एडवांस, फुल, हाफ परसेंटेज और क्रेडिट पे जाता है? किसी को 30 दिन की उधारी है, 90 दिन की भी है. टोटल ओवरऑल साइकिल हमारा 60 डेज में घूम जाता है. 60 डेज के अंदर पूरा पैसा आ जाता है. ओके. सर आपने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाया है, इसमें डायरेक्टर्स का डिटेल दिया. अगर उसमें आप डायरेक्टर्स का फोटो भी डालेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा. हाँ डाल देंगे सर, जरूर डाल देंगे. ओके, थैंक यू सर. सो नाइस. Thank you, sir. Thank you. Our next question is from the line of Deepak Podar from Sapphire Capital. Please go ahead. Hello. Hello, sir. Thank you very much, sir, for the opportunity. So first up, I just wanted to understand, first quarter mein we had lower EBITDA margin, and the major reason was because of the drop in polymer prices and maybe a differential in the timing, right? Because it takes 1 to 2 months of lag for you to pass on these polymer prices. So will it be fair to say that from second quarter onwards, your normalized EBITDA margin, which is at about 11%, वो आ जाएगा, 100 से ज्यादा आ जाएगा. इस क्वार्टर का जब आएगा तो पहले जो कम हुआ है वो यहाँ बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा. Okay. That's great. So you do expect it to normalize and maybe even better than that. Yes, sir. Okay, fair enough. And you did mention that in 3 years we are looking to double the revenue, right? So ideally, in next 3 years we are looking at what 24-25% kind of a revenue CAGR. 25% से ऊपर ही आएगा साहब. वो रेवेन्यू जब बोले 3 साल में डबल होना चाहिए, वो डबल हो जाएगा सर. लगता है तो है. Fair enough. That's great. And I just wanted to understand कि आपने बोला कि your aspiration is 15% margin. Is that your aspiration in 3 years? वो जो बोल रहे थे कि 15% उनको लग रहा है. मैं तो कोशिश करूंगा ना कि ज्यादा मार्जिन आए. ऐसा भी नहीं कि मार्केट में एक ही है, बहुत से लोग हैं. तो मार्केट रेट के हिसाब से ही आपको रेवेन्यू मिलेगी, प्राइस मिलेगा. तो हम सब चीज देखते ही प्राइस डिसाइड करते हैं कि हमारा कस्टमर को लोड भी नहीं लगे और हमारे को ऑर्डर भी मिले, माल भी जाए. सब चीज देखना पड़ता है. समझ गया. तो इसमें what would be our key margin drivers? मतलब I mean you have to identify 3-4 drivers which will drive your margin over next 2-3 years. So what would those be? ड्राइव तो यही है साहब कि जैसे हम कैश में एडवांस पेमेंट देते हैं, माल खरीदते हैं, परचेज में हम बचाते हैं पैसा. मार्केटिंग में भी एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंस नहीं करते हैं, इंटरेस्ट का कोई कॉस्ट नहीं है. एक ही मेरा मार्केटिंग का आदमी है, तीनों प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है. वही मार्केटिंग टीम है, उसी से मेरा ग्रोथ हो रहा है और कुछ ऐड कर रहे हैं. तो सब ओवरहेड का एक्सपेंस कम होंगे, सेल जैसे बढ़ेगी तो मार्जिन पूरा बढ़ेगा. Okay. And we are adding a value-added product like IBCs. We have added 50% capacity from 20,000 to 30,000. So we keep on adding capacity in value-added products, which will improve our margin in coming years. Okay. So in general, we categorize IBC as only the value-added product, right? And polymer and MS would be more like a regular or a commodity kind of a product. Okay.
ओके एंड हम लोग का एक्सपोर्ट्स कितना है सर? एक्सपोर्ट नहीं होता सर, ये हवा है ना, ना इम्पोर्ट हो सकती है ना हवा, ये हवा है, इसके अंदर माल भर के जाता है. Challenges of substitute getting import in India, so we are enjoying that advantage, and at the same time we cannot export this product since it takes a lot of space. Yes, our customers are buying it, they are packing their products and exporting to various countries in the world. Okay, so our export is nil roundabout. Yes. Okay, I understood. And you did mention that for polymers, 90% of polymer we import, right? जी सर, import करते हैं. Aren't we finding any local source in India? I mean, what kind of challenges you see in importing in terms of supply chain or in terms of pricing or a currency fluctuation? नहीं, IBC पॉलीमर जो है वो यहाँ बनता नहीं है. 200 लीटर के जो ड्रम में मटेरियल लगता है वो भी इंडिया में नहीं बनता है. और फॉरेक्स का हमारे को कभी कोई तकलीफ आती नहीं है, हम हेज करके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. We enjoy a very good terms with our with our suppliers of HDP. We have a also with them. So whatever is the market scenario, they will going to supply us. And since we have a good buying power and we are enjoying a good better rate than others. Okay, understood. Yeah, I think that's about it from my side, sir. All the very best. Thank you so much. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Sanket from RS Investments. Please go ahead. Hello. Sir. Mr. Sanket, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. Hello. Hi, am I audible now? Yes. आ रही है आवाज. हाँ सर, बोलिए. नमस्ते, बोलिए. नमस्ते सर. नहीं, थैंक यू सर टाइम के लिए. सर मैं भी क्वेश्चन सर थोड़ा रेपिटेटिव है, वो इसी पर सर आईबीसी की उसमें सर जब अपनी इतना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं और मार्जिन भी बेटर है, तो shouldn't we just focus any fresh capital investment only in this space? देखिए सर, आगे अच्छा ही लग रहा है कि ग्रोथ रहेगी आईबीसी में, और जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है हम उस हिसाब से ग्रोथ करते जा रहे हैं. हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं आगे आने वाले 3 साल में रेवेन्यू हमारी जो 40% आईबीसी से आएगी, 50% मेटल प्लास्टिक से और 10% के आसपास मेटल रन से आएगी. और आज मान लीजिए वो आप भी उसमें समझ सकते हैं, लेवल जो अभी लेवल है मेरा उसमें तक डबल हो जाएगा आईबीसी का. तो सर अपन आईबीसी में ऐसा क्या ट्रिगर देख रहे हैं जहाँ पे अपन को इतना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट लग रहा है? क्या बात नहीं आई सर? सर आईबीसी में अपने को इतना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट कहाँ से दिख रहा है सर? आप जो इंडिया का ग्रोथ हो रही है ना साहब, इंडिया में जो केमिकल जा रहे हैं बाहर वो आईबीसी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्ट जैसे जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आईबीसी का मार्केट उतना बढ़ता जाएगा, ऐसा इसलिए लग रहा है. अच्छा. और सर इसमें मतलब ब्रॉडर प्ले तो यही रहेगा ना सर, कंपटीशन आएगा एंड अपने को प्राइसिंग प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही, राइट, टू अक्वायर एनी न्यू क्लाइंट. ये बात तो सच्ची है कि हर बिजनेस में कंपटीशन रहना है. उसमें हम मान के चलते हैं लाइफ में कि 3 चीज कस्टमर को चाहिए, क्वालिटी, सर्विस और प्राइस. वो तीनों चीज हम बेटर दे सकते हैं, इसलिए हम लगता है कि मेरा ग्रोथ हम कर पाएंगे. ग्रो करने के लिए सर अपन वर्किंग कैपिटल में इसमें चेंजेस नहीं आएंगे ना, मतलब अपन ये ग्रो करने के लिए एडिशनल क्रेडिट साइकिल या ऐसा कुछ देने का कुछ प्लान नहीं है ना? आएगा सर, नहीं आएगा ना. इंटरनल हमारा जो पैसा आएगा 40-50 करोड़ रुपया आएगा, उससे हम कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों मेरा सेट हो रहा है. आगे पहले भी होता रहा है. अच्छा, एडिशनल डेट या वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है नेक्स्ट? अगर अपन 3 साल का भी होराइजन है, 2 साल का लेते हैं, डिसाइड जो आप वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म में यूज कर रहे हो वो अलग है. नहीं, शॉर्ट वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहा हूँ साहब. मेरा जो अर्निंग है उसको मैं कैपेक्स के लिए यूज कर रहा हूँ. मेरा जो अर्निंग है आप एडिशनल कोई डेट का कुछ प्लान नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं डेट लेने का. ओके, थैंक यू सर. आई कम बैक इन द क्यू. Thank you. Ladies and gentlemen, a reminder to all the participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Priyank Parekh from Abacus Asset Managers LLP. Please go ahead.
Thanks for the opportunity, sir. Just wanted to ask on IBC thing. तो हम expansion plan कर रहे हैं. जी sir. And that business is going to come from domestic chemical companies only, or कि हम मतलब outside of India भी chemicals company को test कर रहे हैं? Because हाँ, please. मैं डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ही टारगेट है साहब. बाहर ये जा नहीं सकती है एक्सपोर्ट में. कोई एक दो कस्टमर है जो अभी हमसे लेते हैं, तो बहुत छोटा सा रेवेन्यू है वो 2-4 करोड़ का. तो बोलने का मतलब नहीं है. हमारा टारगेट लोकल डोमेस्टिक जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उनको ही टारगेट रहता है और उनको ही दे रहे हैं. Going forward, market for chemical industry, other paint industry, these both are increasing month-on-month basis, year-on-year basis. And government has also announced many PLI schemes. So it will keep focusing for India's exports to grow. So as exports of India will grow, our product market share will keep on growing like that. The same ratio. Okay. Because why I am asking this question? Because हमारा जो competitor है, who is also in IBC, it has larger capacity in the overseas market compared to their domestic. So that is a good sign that India is growing and India's IBC's production is still have a very good in coming years. It has very good potential to grow further. So that is what we are focusing on right now, and we will not gonna keep it left. We'll keep on adding capacity as the demand will grow further. Okay. Okay. Thanks. Next question is on the drivers of our margins and our profit. So you have touched upon this thing before. Just wanted to understand, like internally, आप क्या target करते हैं? Because we are operating in a pass-on mechanism, so हम particularly EBITDA margin तो target नहीं कर सकते. So are we targeting कि EBITDA per ton कुछ ऐसा होना चाहिए या something like that? Or how we internally plan it? देखिए सर, हम प्रॉफिट का ऐसा तो मार्जिन नहीं सोच के चलते हैं कि हमको इतना आ जाना चाहिए. हम जब मार्केटिंग करते हैं या कस्टमर को लेते हैं, माल देते हैं, तो जहाँ से हमको मार्जिन मिलनी चाहिए वो लेते हैं. उसके बाद जब सारा बैलेंस कंप्लीट होती है तो पता लगता है कि इतनी मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा आ रही है, इसमें ये आ रही है. लेकिन कस्टमर को आप पकड़ने के लिए ईबी डाटा सोच के आप कस्टमर के साथ डील नहीं कर सकते. मेरे को ऐसा लगता है. करेक्ट. हाँ मतलब व्हाट वी थिंक लाइक हमें कुछ तो एक प्राइसिंग करना पड़ेगा फॉर अर्निंग गुड रिटर्न्स ऑन आवर असेट. तो हाउ वी प्राइस दैट थिंग? मतलब हम जो देखिए, हम तो जो सोच रहे हैं ये मार्जिन बढ़ाने से हमारा मार्जिन नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर बैठे हैं. हम तो वॉल्यूम बढ़ाकर ही आपको उसमें मार्जिन ज्यादा बिठा सकते हैं और वो कर रहे हैं. हम चाहेंगे कि आज हम 8,000 में कोई आईबीसी दे रहे हैं, कल उसको हमको मार्जिन बिठाने के लिए ज्यादा बढ़ाने के लिए 200 रुपया बढ़ाने के लिए बोलेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी. तो वैसे मार्जिन तभी बढ़ेगा जब हम 8,000 में ही देंगे और वॉल्यूम बढ़ाएंगे. वॉल्यूम से मेरा ग्रोथ बढ़ेगा और वो मार्जिन ऑटोमेटिक जो हम पहले दे रहे थे 8,000 में 500 रुपया कमा रहे हैं, और जैसे सेल बढ़ेगी उसमें 600 रुपया ऑटोमेटिक वॉल्यूम के अकाउंट में 100 रुपया एक्स्ट्रा आने लगता है. प्लस बहुत सी हम जो आउटपुट सोर्स कर रहे हैं बनाने के लिए आइटम, उसमें 1-2-4 आइटम है जिसको मैं इन हाउस चालू करने वाला हूँ 3 से 6 महीने के अंदर. उससे मेरे को 200-300 रुपये का मार्जिन बढ़ जाएगा. तो उस सब ईपी डाटा मेरा इससे इंक्रीज है. वो सब सोच के करने हैं. जब हो जाएगा तो हम आप लोगों को बता भी देंगे ये चीज मैंने किया, इससे मेरा मार्जिन बढ़ रहा है. ओके, got it. So the driver is volume more or less. The drivers are volume. अब जो कॉस्ट कटिंग जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा कहीं लग रहा है तो उसको बचाना, ऑपरेशनल कॉस्ट बचाना, स्टेप करना. Okay. Thanks. That's it from my side. Thank you. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Sanika Kemani from Middleton Capital Advisors. Please go ahead. हेलो सर, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल्स है जो 80-90% कॉन्स्टिट्यूट करता हो, तो वो कौन कौन से है? क्या चीज नहीं समझा? your raw material cost which constitutes 80-90%. जी.
आपका मेजर रॉ मटेरियल कौन सा है? एचडीएम एचडीपी है और कोई स्टील है, 2 है. ओके, एंड इनका पूरे कॉस्ट में, रॉ मटेरियल कॉस्ट में कितना शेयर होगा? 100% वही है. 100%. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. Next question is from the line of Keshav Lalka from BHH Securities Private Limited. Please go ahead. Hi, Vijay Kumar ji. I'm going through the entire conversation, and there's going to be a major capacity expansion in IBC, where your margins right now are 6.8%, which will go to 10% PAT margin. So, at last 3 years, in pandemic years, sir, you've grown your revenue at sales at 24%, EBITDA at 26%, PAT at 37%. So, not assuming the jump in margins, assuming कि same margins रहेंगे and same revenue growth होएगा next 3 years का, so I'm just extrapolating, right, last year we did 480 crores of sales and 32 crores of PAT. So, ये साल का 600 crore sale होएगा. Approx ये लग रहा है. Hello. Based on what we have done in the last 3 years, where 2 years are pandemic years. So is it fair to make that assumption कि last 3 years का जो आपका revenue growth है और जो PAT growth है वो next 3 years भी आएगा? जरूर लगता तो है सर, जरूर आना चाहिए. Okay, so FY25 it will be 750 crores of sales and 64 crores of PAT, assuming 37% jump in PAT. And FY26 का 940 crores sales दिख रहा है, 87 crores का PAT दिख रहा है. And right now, Pyramid is quoting at 12 times earnings versus our nearest competitor, Time quoting at 28 times earnings. So, मुझे तो बहुत means I just feel that this is very, very mispriced in the market. But what is your comment, sir? Can you make a broad comment that we'll grow our revenue at 25% and EBITDA PAT at 37%? Sir, revenue तो 25% जरूर हम सोच रहे हैं. इसी डाटा का तो हम नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट देते हैं तब देखते हैं उसमें क्या कैलकुलेशन किया नहीं है, एक्यूरेट क्या हो जाना चाहिए. वो मैं देख के होगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा उनके पास जो निकाल कर क्या आना चाहिए, एक चीज बनाऊंगा तो. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Our next question is from the line of Sanket from RS Investments. Please go ahead. Sir, just last question, sir. Any plan to have some factory visit soon or maybe in-person management interaction? हाँ चल रहा है सर, उनको बोला हुआ है, ये आए कर रहे हैं. वो आपको जब भी जाना तो आप बताइएगा तो आपको भी प्लांट विजिट करवा दिया जाएगा उसको. ओके, थैंक यू सो मच सर. मैं ऑफलाइन कनेक्ट करता हूँ उसके लिए सर. यस सर. Thank you. Our next question is from the line of Deepak Podar from Sapphire Capital. Please go ahead. Hello. Sir. Just one follow-up question, sir. So, do we have any seasonality in our business, or in any specific quarters which are good or bad? नहीं सर, ऐसा नहीं. 12 महीना सेम जैसे ही रहता है. किसी एक महीने में थोड़ा 19-20 हुआ तो दूसरे महीने में कंपनसेट हो जाता है. ऐसा कोई क्वार्टर या सीजनल कोई बिजनेस नहीं है अपना. At the same time, we have a customer with all the verticals like paint, chemical, pharma, etc. So we have a customer. We have a very diverse customer base, I would say. Okay, understood. Yep, that's it from my side, sir. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Dalpat B. Mehta from Sun City Advisors. Please go ahead, sir. Sir, just I wanted to know आप FY23 का एनुअल रिपोर्ट एक्सचेंज में फाइल करने वाले हैं क्या? आप वेबसाइट पे अवेलेबल है सर हमारा? सर एक्सचेंज पे तो नहीं है, आपकी वेबसाइट पे होगा तो देखा नहीं है. एक्सचेंज पे भी है क्या? वेबसाइट पे है ना? वेबसाइट पे है सर हमारे पास. ओके, तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे नहीं है. नहीं, एक्सचेंज वो नहीं रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए नहीं दिया सर. हमारी वेबसाइट पे हम दे दिए सर उसको. ओके, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question of our question and answer session.
I would now like to hand the conference over to the management of Pyramid Technoplast for closing comments. Thank you, and over to you. So I would like to thank everybody to join us and ask questions. And we are very thankful that you have taken time out of your busy schedule and joined us today for the meeting. And hopefully we will improve or we will take care of all the suggestions given by you. And hopefully next quarter will improve our margins as we have told everybody. Thank you so much. Thank you. On behalf of Go India Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.